So hello everyone, we are here again once again to solve 2021 English paper part 2. ठीक है, which is from 61 to 90. Earlier part from 30 to 60 has already been done. This is the second part. Okay, so we'll begin with the 61 question. Rohan dashed the movie before he read the reviews. Okay, so options are watches, have watched, had watched, was watching. So this says that a sentence describes the two actions that has happened in the past. एक कि उसने मूवी देख ली है और उसके बाद उसने रिव्यू पढ़ लिए हैं, लेकिन ये दोनों पास्ट में हो चुके हैं. लेकिन जब एक एक्शन पास्ट में पहले हो चुका हो दूसरे एक्शन के होने से पहले, दोनों एक्शन पास्ट में ही हैं लेकिन एक पहले हुआ, उसने पहले रिव्यू पढ़ लिए मूवी देखने से. रोहन हैड वॉच द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यूज. ठीक है, उसने मूवी पहले देख ली, जिस रिव्यू पढ़ने से पहले वो मूवी देख चुका था. तो रिव्यू भी उसने पढ़ लिया है और मूवी भी देख चुका है, लेकिन मूवी वो पहले देखा है. तो जब ये केस आता है हम इसको रखेंगे कि व्हेन वन एक्शन, वन पास्ट एक्शन happens before another past action. We use perfect past, perfect tense. And वो कौन सा होता है? Had प्लस पास्ट पार्टिसिपल. तो वो होगा वॉचेस, तो प्रेजेंट है, ये नहीं होगा. वॉज वॉचिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है. हैव वॉच्ड, ये पास्ट में नहीं है. हैड वॉच्ड इज पास्ट, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, 61 का आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट पर आते हैं. बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट. तो नेक्स्ट मंथ होने से पहले, जब नेक्स्ट मंथ होते ही या होने तक हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे. तो बाय द नेक्स्ट मंथ यही इंडिकेट करता है कि एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो उस कंडीशन में तो फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसमें हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और उसकी कंडीशन कौन सी होती है? शैल या फिर विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो हैज़ कंप्लीटेड, क्या ये शैल और विल हैज़ का थर्ड फॉर्म है? शैल तो हमारे पास है, लेकिन क्या ये हैज़, हमें तो हैव चाहिए, ये काम नहीं करेगा. कंप्लीटिंग, ये प्रेजेंट में है. ये सिर्फ कंप्लीटेड, ये पास्ट टेंस में है. हैव कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव भी आ गया. तो बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. ओके, आगे चलते हैं. चूज द मोस्ट सुटेबल ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव. इन द मिडल एजेस पीपल डैश ट्रेवल बाय प्लेन. क्या पुराने वक्त में लोग प्लेन से ट्रेवल कर भी पाते थे? नहीं. क्या उन्हें करना पड़ता था? हैड टू? नहीं, वो कर नहीं पाते थे, कुडेंट. अब इन दोनों में कंडीशन है कि सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज कौन सा होगा, है ना. तो क्वेश्चन टेस्ट करता है लॉजिकल फैक्चुअल नॉलेज. तो कमर्शियल फ्लाइट उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो लोग उस समय ट्रैवल प्लेन से नहीं कर पाते होंगे. तो कुडेंट जो है कैन का नेगेटिव कॉनिटिव, नेगेटिव फॉर्म है, ना कि कांट. ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि पीपल कैन ट्रैवल बाय प्लेन और पीपल कुडेंट ट्रैवल बाय प्लेन. ठीक है, तो 63 का आंसर हो जाएगा डी. आगे चलते हैं. केट इज इल सो शी डैश स्टे इन बेड एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. तो ये कहता है केट इल है, तो वो बेड पे है, तो ये बेड पे रहना उसकी एक ऑब्लिगेशन है, एक नेसेसिटी है, तभी तो वो बेड पर है. वो इतनी इल है तो शी कांट स्टे इन बेड. ऐसा कैसे हो सकता है जब वो इल है? तो शी डजेंट हैव टू, वो
क्यों नहीं रुकेगी बेड पर जब उसकी तबीयत खराब है? शी नीड स्टे इन बेड, नीड और हैज़ टू शोज देयर ऑब्लिगेशन। 64 का आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द नियरेस्ट, सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। द मेड सर्वेंट लेफ्ट द पुलिस स्टेशन कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है गिल्ट और रिमोर्स और व्हाट वी कुड से, और होता है सौरो, सौरो कह सकते हैं, दुख। ठीक है, तो रिमोर्सलेस ये तो नहीं होगा। एंग्री तो गुस्सा होता है, सोर होता है पेन, फुल और ये भी एंग्री होता है। पेनिटेंट होता है गिल्ट। तो कॉन्ट्राइट का करेक्ट आंसर होगा पेनिटेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। ये किसी और तरीके से और इनके सिनोनिम पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच अ पंक्चुएशन मार्क इज टू बी अप्रोप्रिएटली यूज्ड। तो इट इज़ मैंशनड इन द नोटिस, ऑल ऑफ अस शुड रीड इट। तो इसमें सेम टाइम की स्टेटमेंट है, बस हमें पंक्चुएशन बताना है। तो इट इज़ मैंशनड इन द नोटिस, ऑल ऑफ अस शुड रीड इट। दो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो अगर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कंजंक्शन से नहीं जुड़े, इंडिपेंडेंट क्लॉज नॉट joined by conjunctions, कंजंक्शन कौन से होंगे? एंड, बट, सो, तो हम उसे, अगर नहीं है तो हम उसे सेमी कॉलन से जोड़ते हैं। ठीक है, सेमी कॉलन किसमें? डी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट फ्रेज प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन है। हाउ कैन दे बी गोइंग आउट, जेन हैज़ नथिंग डैश पीटर। हाउ कैन दे बी गोइंग आउट, जेन हैज़ नथिंग इन कॉमन विद, ये करेक्ट फ्रेज है, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज ऑलवेज टू हैव इन कॉमन विद। तो इन कॉमन विद शुड बी द राइट आंसर। ओके, क्योंकि सेम करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, इंटरेस्ट ये ढूंढ रहा है। ठीक है, 67 का आंसर डी होगा। आगे चलते हैं। Which of the following method is based on the principle from example to generalization? तो incidental method, remedial teaching, deductive method और inductive। तो from example to generalization ये एक inductive method होता है कि example दिया पहले हमने किसी ने कि देख instructor present students with multiple specific examples and then guide them, मतलब वो example देता है और फिर उनको एक बताता है कि वो pattern समझें, फिर वो एक जनरलाइज बात पर निकल कर आते हैं। तो इसका होता है एग्जाम्पल देना और फिर रूल पर पहुंचना। ठीक है, तो ये जनरलाइज फॉर्म होगी। तो एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन पे आना इंडक्टिव मेथड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्रहेंशंस को हम आखिर में करेंगे, जिससे हमारा सारा ध्यान कॉम्प्रहेंशंस पर जाए। पहले हम ग्रामर की चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, 79 क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स, द अर्ली एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड शुड बी इन मल्टी लैंग्वेजेस, नो। फॉरेन लैंग्वेजेस, नो। सेकेंड लैंग्वेजेस, नो। इट शुड बी फर्स्ट लैंग्वेज। ओके, आगे आते हैं। या 81, द अल्फाबेटिक मेथड, द फोनिक मेथड, द वर्ड मेथड एंड द सेंटेंस मेथड आर। अल्फाबेटिक मेथड, phonic method and the word method are listening, no. Speaking, okay, let's see. Reading, okay, and writing. So alphabetic, phonic, word, sentence, these are well known structural methods to which use them for leading literacy. Okay, this should be the right answer. We'll go in the end. Yeah, select the correct alternative that which can be substituted for the sentence below. The person who talks in sleep. So philatelist, philatelist तो नहीं होता है वो लोग। philatelist तो वो होते हैं जो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं। somnambulist,
जो नींद में बोलते हैं वो स्लीप वॉकर, ये स्लीप में चलता है, सॉरी। सोम सोमनीलोक्विस्ट, जो नींद में बोलता है, बिकॉज इट इज सेड हु टॉक्स इन स्लीप। तो लोकिस्ट से भी ये समझ में आना था कि अगर बोल रहा है तो वो सोम, ठीक है। 89 पर आते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। पोटेशियम की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, पॉसिबिलिटी की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, प्रियम्बल की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। तो जो तो करेक्ट रॉन्ग स्पेलिंग है वो पैरासोलॉजी है। पैरासोलॉजी नहीं, पैरासिटोलॉजी होता है वो, पैरासीटोलॉजी। ओके, आगे चलते हैं। परस्यू, परस्यू की स्पेलिंग सही है। परस्यूट, परसुएट की स्पेलिंग भी सही है। पेरूज की स्पेलिंग भी सही है। परस्यूट की स्पेलिंग गलत है, जो होनी चाहिए थी PURSUIT। ओके, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। आते हैं सिनोनिम बताना है हमें 87 पे। शी रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू अबैंडन हर। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, टू लीव समथिंग बिहाइंड। तो ट्राई करना नहीं, ज्वाइन करना नहीं, कीप अप करना ये भी नहीं, फॉरसेक का मतलब ही अबैंडन करना होता है। तो 87 का आंसर हो जाएगा टी। ओके, 86 पर हमें एंटोनिम बताना है। शी वॉज डिटरमिन्ड नॉट टू डिसिपेट हर एनर्जी। तो डिसिप्लेट का मतलब होता है वेस्ट करना। ओके, तो यूटिलाइज तो नहीं होगा। कंजर्व, यस, जो कंजर्व किया है वो संजो के रखा है, मीन्स संभाल के रखा है, बचा के रखा है। तो 86 का आंसर हो जाएगा बी। 85 पर आते हैं। ये हमें बताना है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। द एग्जाम वेंट डाउन इन फ्लेम्स, आई शुड हैव स्टडीड वेल। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खराब गया होगा क्योंकि उसे अच्छा पढ़ लेना चाहिए था। एग्जाम पेपर गॉट बर्न्ड, नो। पास विद गुड मार्क्स वगैरह, पास विद गुड मार्क्स तो फिर उसे ये इस बात का सोचना ही क्यों पड़ा कि वो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था, नहीं। फेल्ड स्पेक्टेकुलरली शुड बी द राइट आंसर। गो डाउन इन फ्लेम्स इज मीन्स टू फेल completely. Okay, 85 complete. Now we'll go for 84. सर्विस विल टूरिज्म इन एयर टैक्सी द स्टेट बूथ। तो अगर हम इसे सब्जेक्ट से भी जाएं तो एयर, या फिर स्टेटमेंट पढ़ के जाएं, टूरिज्म इन द स्टेट सर्विसेज विल बूस्ट एयर टैक्सी। एयर टैक्सी सर्विसेज ही एक सब्जेक्ट हमें बताता है जिससे हमें स्टेटमेंट स्टार्ट होने की समझ आती है। तो दो स्टेटमेंट्स में हमें दिया है एयर टैक्सी, एयर टैक्सी। एयर टैक्सी बूस्ट सर्विसेज और एयर टैक्सी सर्विसेज विल बूस्ट टूरिज्म इन स्टेट। This should be the right answer. Okay, we'll go understand in comprehension 74 to 78, 79, 80, 82, 83. Okay, we'll go in sequence. In order to assess the all-round development of a learner, teacher has to take the help of unit and evaluation, term and evaluation, or the continuous or comprehensive evaluation. The correct answer should be continuous and all round continuous and comprehensive evaluation. Why so? Because for all round development a teacher must use CCE method. You must have heard continuous and comprehensive evaluation method. Active learning takes place when learners are passive? No. Quiet? No. It should be interactive. Okay, we'll go ahead. Yeah, in 89 question. In continuous comprehensive evaluation, teacher tries to find out what extent the learning objectives are achieved. Make the learner assess the teacher? No. Identify the special needs of learner in a group? Okay. Make the learner by cramming things like learning? No. So continuous comprehensive evaluation, the teacher tries to find out what extent the learning objectives are achieved. This should be the right answer. ठीक है, हम समझें कि एक ऑनगोइंग असेसमेंट है जिसमें एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की जाती है कि किन किन तरीकों से चीज़ों को समझाया जा सकता है। ओके, नाउ वील गो विथ कॉम्प्रिहेंशंस। ओके,
तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले कॉम्प्रहेंशन पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा ध्यान उन क्वेश्चंस पैसेज में उन जगहों पे जाए। स्टैमरिंग इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ फिजिकल डिसऑर्डर, hindered growth, lack of self-confidence, lack of understanding. The second stage of child's understanding the language is speaking, writing, listening, reading. Dash are basically the reason for developing a fear in the child's mind. Parents, overcautious mother, fathers, uncles. Fluency in such patients can be incorporated in the speech of such patients through hypnosis, slap, punishment, symbiosis. By the time the child becomes 2 years old, he or she can speak complex sentences, only understand the spoken language, understand and speak simple languages, write the alphabet. Okay, we'll see in the passage. Stammering is a habit disorder linked with lack of self-confidence. तो हमारे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था, stammering is caused by physical disorder, hindered growth. It should be lack of self-confidence. 16 का आंसर C हो जाएगा। आगे चलते हैं। Basically, for a child, now we'll come to second. The second stage of child's understanding the language is, we'll read. Basically, for the child to understand a language, there are 4 stages. The first is learning to understand the spoken language, and the second is speaking. So it is mentioned the second stage of learning should be speaking. 71st, dash are basically the reasons for developing a fear in child's mind. Both of these usually develop around the age of 2, which is understand the spoken language, and the speaking, which develop at the age of 2. The third stage is speaking complex sentences, which develops at around 3rd, and 4th is when child recognizes the written alphabet. In 80% of the children, while the 3rd and 4th stages are at play, the first two get disturbed because something new is getting incorporated in the mind. This is absolutely normal, but what overcautious mothers do is fret a lot, and the child develops a fear which later manifests itself as stammering. तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बट ओवर कॉशियस माएँ जो होती हैं वो ज़्यादा चिल्लाती हैं बच्चों पर, और चाइल्ड एक फियर डेवलप कर देता है जिससे वो स्टैमर हकलाने लगता है। तो डैश आर बेसिकली द रीजंस फॉर डेवलपिंग अ फियर इन द माइंड। तो किसकी वजह से फियर हो रहा है? ओवर कॉशियस मदर की वजह से। आगे चलते हैं। फ्लुएंसी इन सच पेशेंट्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्पीच ऑफ सच पेशेंट्स थ्रू, हाउ कैन द फ्लुएंसी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड among the kids? We'll check. Fluency can be incorporated in the speech of such patients through hypnosis. So the right answer is A for 72. By the time the child becomes 2 years old, he or she can, as it is mentioned here, the first is learning to understand the spoken language, and the second is speaking. Both of these usually develop around the age of 2. The right answer should be understand and speak simple languages. Okay, now we'll head towards the another paragraph, which is from 74 to 78. First we'll read the questions, then we'll go through passage. What was the impact of last great war on literature? It had no impact. It aggravated the popular revulsion against violence. It shook the foundation of the literature. It offered eloquent support to the Western world. What did Tagore articulate in his last testament? Offered support to Subhash Bose, exposed the human pretensions of the Western world, expressed the loyalty to England, encouraged the liberation of countries. What was the stance of Indian intelligentsia during the period of Great War? Indifferent to Russia's plight. They favored Japanese militarism. They promoted creativity out of confused royalties. They expressed sympathy for England's dodged courage. And the next is find out the passage word that means disgust, disappointment. So from these statements we need to find out which relates to these mentioned things. Okay, now we'll go to the question. What was the impact of last great war on Indian literature?
What did Tagore articulate in Last Testament, and what was the stance of India's intelligentsia during the period of Great War? We read, like the last Great War, which nearly shook the foundations of the modern world, had little impact on Indian literature beyond aggravating the popular revulsion against the violence and adding to the growing disillusionment with the human pretensions of the Western world. So, as it is mentioned, what was the impact of last Great War on the Indian literature? It aggravated popular revulsions against the violence. It should be right answer. Now 75th. What did Tagore articulate in his Last Testament? We'll read. This was eloquently voiced in Tagore's later poem and his Last Testament, Crisis in Civilization. The Indian intelligentsia, so it should be, the passage states that what it talks about, the last great war which nearly shook the foundations of modern world had little impact on Indian literature beyond aggravating the popular revulsions against violence and adding to the growing disillusion with the human pretensions of the Western world. This was eloquently voiced in Tagore's later poems and his latest testament, Crisis in Civilization. So, offered support to both, no, expose the human pretensions of the Western world. This should be the right answer. We'll go with 76. What was the stance of Indian intelligentsia during the period of Great War? The Indian intelligence was in a state of moral dilemma. On one hand, it could not help them sympathizing with England's dogged courage in the hour of peril, the Russians fighting with their back to the wall against the ruthless Nazi hordes, and with China groaning under the heel of Japanese militarism. So it is mentioned the Indian intelligentsia was in a state of moral dilemma. On the one hand, it could not help sympathizing with England's dodged courage. तो ये मेंशन है इंडियन इंटेलिजेंस का स्टैंड था कि they expressed sympathy for England's dodged courage. Okay, 77th. We'll go for find out the passage words that mean disgust and disappointment. So disgust corresponds to revulsion, जिसका मतलब होता है, डिस्गस्ट का मतलब होता है कि बहुत लोथिंग, बस घिन जिससे आती है या अजीब सा जिससे महसूस होता हो. लोथिंग एंड रिवल्शन आर सेम मीनिंग. And disappointment corresponds to disillusionment, so which states this. So we'll find out. Upsurge liberate, no. Violence aggravating, no. Revulsion and disillusionment corresponds to, like we'll see here, disgust is revulsion and disappointment is disillusionment. Okay, now we'll head to the last question. Which of the following statement is true? We go with the passage. On other hand, their country was practically under military occupation of their own soil, and the Indian army under Subhash Bose was trying from the opposite camp to liberate their country. So Indian army under the Nazis were trying to liberate the country. Okay, they were liberating, but were they under a Nazis camp? Indian army under Subhash was trying to liberate the country. It is mentioned here. So 78's answer should be B.
So in this way we have completed the whole 2021 paper, part 1, part 2. So happy learning, and we'll see you in the next question paper with complete set of all questions in second language paper. Okay, thank you.